index of H in G, index of H in G. Let G be a group and H be a subgroup of G. Then number of right or left cosets of H in G is said to be index of H in G. Please note, this is number of distinct right cosets or distinct left cosets. Number of distinct right or left cosets of H in G is said to be index of H in G. इसे हम इस टाइप से लिखते हैं, G ऑगमेंटेड H, और ये होता क्या है, ये होता क्या है ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H. थ्योरम कर रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड. लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप. इसे याद आया, इंडेक्स भी तभी फाइंड आउट होगा जब ग्रुप फाइनाइट होगा. लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप and A belongs to G. Then order of equivalence class is equal to order of G बटा order of NA. हम ये रिजल्ट प्रूव करना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ NA. प्रूफ कर रहे हैं. Since G is a group, G is a finite group, since G is a finite group and A belongs to G, then normalizer of A is equal to G के वो सभी एलिमेंट जो A के साथ कम्यूट करते हैं, एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल टू X इनवर्स AX, यानी A के सारे कंजुगेट्स इसके अंदर आ जाएंगे, कंजुगेसी क्लास के अंदर आ जाएंगे. डिफाइन ए मैप फ्रॉम G by NA to this class of A. Such that phi of NAX is equal to X inverse AX for all X belongs to G. Because G by NA किस टाइप के एलिमेंट है इसके अंदर, NA X टाइप है,
x belongs to G. वेल डिफाइंड चेक कर रहे हैं क्योंकि मैपिंग हमने खुद ही फाइंड की है, तो इसलिए हम वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। दो पॉइंट हमें ले के चलने हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू G सच दैट NA x is equal to NA y. It implies NA x is y inverse is equal to NA by y inverse. It means NA x y inverse is equal to NA it implies x y inverse belongs to NA. Because HH is equal to H is equal to HH if and only if H belongs to H. It implies x इनवर्स y कम्यूट करेगा a के साथ। एक्स इनवर्स से परी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं y के साथ। बोथ साइड इट इम्प्लाइज x इनवर्स ax y इनवर्स y इज इक्वल टू x इनवर्स x y इनवर्स ay which is equal to x inverse ax identity is equal to identity into y inverse ay which is equal to x inverse ax is equal to y inverse ay. It means phi of nax is equal to phi of nay. Hence phi is well defined. वन चेक कर लेते हैं अब। टेक NAX comma NAY belongs to G by NA such that NAX such that phi of NAX is equal to phi of NAY। ये क्या हो जाएगा x इनवर्स AX और ये क्या हो जाएगा y इनवर्स AY। x से हम परी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया हमारा x इनवर्स इंटू ax y इनवर्स और यहाँ से x y इनवर्स a
into y inverse. It implies identity a x y inverse is equal to x y inverse a into identity. It means x into y inverse commute with a. It implies xy inverse belongs to NA. It further implies NA xy inverse is equal to NA. It means NA x is equal to NA y. It implies phi is 1 1. It implies, ये तो हम पहले बोल चुके हैं, phi is well defined. ऑन टू चेक कर लेते हैं. For any x inverse ax belongs to conjugacy class of A, there exists an ax in G by NA such that NAX का जो फाई है वो x इनवर्स AX हो जाएगा. It implies phi is on to. It implies phi G by NA to conjugacy class of A is 1 1 and on to math. It implies order of G by NA is equal to order of conjugacy class of A. It means order of A conjugacy class of A is equal to order of G बटा order of NA. Which is equal to number of distinct right cosets of H of NA in G. Clearly, order of conjugacy class of A is equal to order of G बटा order of NA.
since conjugacy relation is an equivalence relation on G, therefore this relation divides G into disjoint equivalent disjoint equivalence classes. Therefore this relation divides G into disjoint equivalence classes. It implies G can be written as union of A belongs to G conjugacy class of A. It implies order of G is equal to summation A belongs to G order of conjugacy class of A. उसे एक नंबर दे देते हैं पिछले इक्वेशन को, यूजिंग इसे नंबर 2 दे देते हैं, यूजिंग 1 into we have order of G is equal to summation A belongs to G order of G बटा order of NA. कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर की वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रख देंगे. दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लास इक्वेशन ऑफ G. We know that A belongs to ZG if and only if NA is equal to G. It implies A belongs to ZG if and only if order of NA is equal to order of G. इसको हम यूज कर लेते हैं ऊपर लास्ट इक्वेशन में. ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 2 हिस्सों में बांट लेते हैं G के एलिमेंट्स को. एक A बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ NA प्लस समीशन A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ NA. क्योंकि ऊपर हमने ये थ्योरम पढ़ी थी A बिलोंग्स टू ZG इफ एंड ओनली NA इज इक्वल टू G, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे आपस में. NA और ऑर्डर ऑफ NA और ऑर्डर ऑफ G बराबर है तो कट के 1 आ गया. समीशन A डज नॉट बिलोंग्स टू ZG ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ NA. क्योंकि जितने एलिमेंट ZG में हैं उतनी बार A1 को ऐड करना है, इसीलिए ये आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ ZG. और दूसरा
समीशन एज इट इज रहा।